We'll start the check. Good evening, dear children. We'll start with regression. Start with regression. What is regression? Given that the two variables are correlated to each other, दो variables are correlated to each other, value of other variable is given as regression. Regression is nothing but given that two variables are correlated to each other. Given that two variables are correlated to each other, we can estimate the value of one variable when the value of other variable is known as regression. Let me give you an example. अभी मैथ्स वन और मैथ्स टू कोरिलेटेड है. मैथ्स वन के बहुत सारे फॉर्मूलाज मैथ्स टू में आते हैं. वी अप्लाई द लॉजिक एंड एवरीथिंग ओवर देयर. तो गिवन कि योर मैथ्स वन मार्क्स आर वेरी वेरी गुड, टू गुड, एक्सेलेंट, वी कैन एस्टिमेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स टू. ये मैथ्स टू पे भी अच्छा होगा. Given your marks in maths and accounts are also correlated. So given your marks in maths, and we can even estimate accounts marks also. But given the marks of maths, we cannot estimate OCK marks. A child very good in maths cannot be said to be very good in OC. क्योंकि OC में अच्छा हो या ना हो, OC और मैथ बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. दे आर बोथ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स. सो उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है. तो हम रिग्रेशन वही वेरिएबल्स टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स है. Given the value of one variable, we estimate the value of another variable is known as regression. Now this we have done completely in SYJC in detail कर चुके हो. यहाँ पे भी same है with little bit ahead. इसमें और कुछ नहीं है. So by the time I complete 1 week में regression, उसमें तुम्हारे correlation की जो objectives है वो खत्म करोगे. You will complete correlation objectives by that time, because this regression chapter is very very easy for you because you have done too much in detail in SYJC और वो भी अभी हुआ है. Correct? So we do it in over here. Regression is, please write, regression is, हाँ तो that's why explaining in detail. Yes, don't worry, I am explaining. Yes. Yes. Regression is a basic technique which helps in estimating the value of one variable when the value of when the value of other correlated variable is known. Regression is a basic technique which helps in estimating the value of one variable when the value of other correlated variable is known. This estimation. This estimation is done with the help of two regression equations. Two regression equations. First is ये जो estimation है, which is done with the help of two regression equations. One is regression equation x on y, and another is regression equation y on x.
equation y on x. Correct? This is done with the help of two regression equations. One is regression equation x on y and the other is regression equation y on x. Now what is regression equation x on x? Y x on y. Regression equation x on y. It means estimating estimating value of x when value of y is given. Regression equation x on y means estimating x when value of y is given. That is the regression equation x on y. Estimating x when y is given, it means x is a dependent variable. X is dependent variable and y is independent variable. Y independent variable है. देखो, production of food grains, estimating production of food grains when rainfall in centimeters is given. अभी रेनफॉल तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने मर्जी से नहीं बरसता, कभी भी बरसता है, दिसंबर के महीने में भी बरसा अभी, है ना. So it is independent variable. Food grain production is dependent on rainfall. So estimating x when value of y is given. That is x is a dependent variable, y is a independent variable. Regression equation x on y is given as x minus x bar bxy y minus y bar. X minus x on y है ना, मतलब estimating x when y is given. X dependent, y independent. Starts x on y starts from x. X minus x bar is equals to bxy y minus y bar. What is bxy? Bxy is regression coefficient. Regression coefficient x on y. Regression coefficient x on y. Now first formula of bxy. Bxy is r into standard deviation x upon standard deviation y. R कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x देखो ऐसे है bxy तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. लुक हियर bxy है ना, तो r इंटू पहले x है तो स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन y. एवरीवन चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाओ. When to use what formulas later stage. पहले नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाओ. ये पेज का कॉपी हो गया एवरीवन. डन नो. यस, मैथ स्टूडेंट के लिए ये रिविजन है ऑफ रिग्रेशन, है ना. तुम्हारे लिए रिग्रेशन का रिविजन हो जाएगा. That was without calculators. This is with calculators. That's it. Done. Chalo next. Second, formulas are same. We don't change the formulas in CFC, neither in FIJC. No. Don't know. BXY is summation XY minus summation X summation Y upon N. डिनोमिनेटर में ये कोरिलेशन का न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में y आएगा ओनली. समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y द होल स्क्वायर अपॉन n. करेक्ट. थर्ड, bxy, x is u, y is v, is
समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी अपॉन एन, यू और वी बराबर लिखना, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, अपॉन डिनोमिनेटर में वी आएगा, समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी द होल स्क्वायर अपॉन एन। फोर्थ, Vxy is summation x minus x bar, y minus y bar. न्यूमरेटर तो पूरा सेम एज कोरिलेशन का ही है, ऑल फोर फॉर्मूलाज, थ्री फॉर्मूलाज, न्यूमरेटर इज सेम एज दिस ओनली, अपॉन डिनोमिनेटर में y आएगा, समेशन y माइनस y बार द होल स्क्वायर, y माइनस y बार। एवरीवन करेक्ट? डन? चलो, नाउ सेकेंड पार्ट। नेबर्स, नेबर में चल रहा है काम। नेक्स्ट, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, regression equation y on x, estimating the value of y when value of x is given. Value of x is given. Estimating the value of y. So here y is a dependent variable. Y is a dependent variable. And x is a independent variable. X is independent variable. Correct? Y is a dependent variable, x is an independent variable. Correct? Regression equation. Y on x. Y on x है, तो estimating y when value of x is given. Y is a dependent variable, x is an independent variable. Regression equation y on x means y minus y bar, vyx, x minus x bar, y minus y bar, vyx is equals to x minus x bar. X on y क्या था? X minus x bar is equals to bxy, y minus y bar. This is y on x. So y minus y bar, byx, x minus x bar. What is byx? Byx is regression coefficient. Y on x, correct. Regression coefficient y on x. ये y on x, ऐसे y on x. byx सबसे फर्स्ट फॉर्मूला r इंटू सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x. byx is summation xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n. न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में x आएगा. लिसन हियर एसपी स्टूडेंट, लिसन हियर, डिनोमिनेटर में x आएगा. लुक हियर, डिनोमिनेटर में x आएगा, समेशन x स्क्वायर माइनस
Om summation x squared minus summation x the whole square upon n by axis bvu summation uv minus summation u summation v upon n डिनोमिनेटर में u आएगा समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u द होल स्क्वायर अपॉन n डिनोमिनेटर में u आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आएगा, करेक्ट. बी वाई एक्सिस समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन डिनोमिनेटर में x आएगा समेशन x माइनस x बार द होल स्क्वायर. रूल नंबर 18 1 1 2 12 ये सब क्यों बंद है कैमरा 61 851 20 हाँ ओके 25 वाई कैमराज आर ऑफ. चलो जल्दी जल्दी ऑन करो. ठीक है Tanu, no picture, putting your picture, huh? I should be able to see you only. Yes. Now next. Correct? और formulas हैं लेकिन बाद में. Everyone written? Okay. Remove regression chapter. Come to this unit 1, question number 1. Unit 1, question number 1. The following data, height in centimeters and weight in kgs of 1,000 policemen are given. Number of policemen are 1,000, n is 1,000. Average height of x is 170 centimeters. Average height of x is 170 centimeters. ये x bar है, लिखो इधर x bar. Average weight of y is 68.2 kgs. This is y bar. लिखो इधर y bar. Standard deviation of height. Height is x. This is standard deviation of x. This is standard deviation of x. Standard deviation of weight is 9 kg. ये standard deviation of y है. Coefficient of correlation between height and weight is 0.6. R is 0.6. R is 0.6. Correct? R is 0.6. We have to find regression equation x1y and regression equation y1. हमें x1y और y1x दोनों find करना है. Now we have to first, whenever regression equations x1y are to be found out, या y1x find करना है, पहले कैसे सोचना है. See how the things are to be thought of. यहाँ पे है for regression equation x1y. How we have to think regression equation x on y के लिए. x on y के लिए सबसे पहले x bar, second y bar, third bx bar, fourth regression equation x on y, regression equation x on y, then fifth estimate y, estimate x when y is given.
एक्स फाइंड करना है और वाई गिवन है, तभी रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई यूज कर सकते हैं, मैं तो नहीं। रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, सबसे पहले एक्स बार, सेकेंड वाई बार, थर्ड बी वाई एक्स, फोर्थ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, y on x, fifth estimate y when x is given, तभी हम regression equation y on x use कर सकते हैं, when we have to estimate y when x is given. This is the way we have to think. Done everyone? अभी शॉर्टकट से सॉल्व करना है, एस वाई जैसे जैसे लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लिखने। First sum is there, I will do it little bit in detail. Second sum onwards we will see here. We have to find regression equation x on y and y on x. सबसे पहले we need x bar. मैं कैलकुलेटर दूँ, x bar. I'm just writing for your understanding. X bar is given 170 centimeters. Y bar is given 68.2 kgs. Standard deviation of x is given 15. Standard deviation of y is given 9. R is given to us as 0.6. We have to find regression equation x on y and y on. सबसे पहले x bar is given, second y bar is given, third is bxy. Bxy, think of the formula. See what formula we are given here. ये देखो ये वाला r standard deviation x standard deviation y. तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, bxy is equal to r into standard deviation x upon standard deviation y. This formula is to be used. So we write here bxy is r into standard deviation x upon standard deviation y. 0.6 into 15 divided by 9. How much is the answer? चलो ऐसी नोट तो करो, is equal to 9 divided by bxy is 1. Next, regression equation x on y. Regression equation x on y. It is x minus x bar, bxy, y minus y bar, x minus x bar देखो क्या दिया है, x bar is given to us as 170, bxy is 1, y minus y bar is 68.2. रिग्रेशन इक्वेशन x on y रहेगा तो x on लेफ्ट साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड पे। देखो यहाँ पे, एवरीवन स्टॉप राइटिंग, पे अटेंशन। 1 into y is y, 1 into minus 68.2 is 68 minus 68.2, 68.2 टाइप करो, 68.2 प्लस माइनस साइन से माइनस करो, this minus 170 will come here, तो प्लस 170 प्लस 170, you get 101.8, 101.8 प्लस के माइनस दिख रहा है यहाँ पे प्लस है, so साइन में गलती नहीं होगी, प्लस 101.8. This is in the standard form of regression equation x on y. कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में मालूम है, x is equals to bxy into y plus c. यहाँ पे bxy is 1 y है ना, तो ऐसे लिखते नहीं है हम 1 y plus c.
So Bxy is 1, this is y, and this is c. This is a standard form of regression equation x on y. Standard form of regression equation x on y. Now we have to find regression equation y on x. So third step is Byx. Byx is r into standard deviation y upon standard deviation x. R is 0.6 into standard deviation y is 9 upon standard deviation of x is 15 into 9 upon 15. Do it everyone. 0.6 into 9 divided by 15. How much you get? B by x 0.36. Correct? Yes. रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y हो गया. उसके बाद y ऑन x के लिए सबसे पहले x बार चाहिए, फिर y बार चाहिए, फिर b by x चाहिए. तो x bar and y bar are given. b by x निकाला. Now next step, fourth step is to find regression equation y on x. Fourth regression equation y x. Therefore, y minus y bar. What is y bar? Y bar is 60.2. 0.36. X minus x bar is 170 is equals to 36 into 170 comes 0.36 into 61.2 and इसे minus करो. Minus 61.2. Yes. Plus ये इधर आएगा. Plus 68.2. 7. 7 is plus. 7 is plus. Plus 7. Standard form of regression equation minus y is equal to b by x plus c, b by x, ये x is c. This is standard form of regression equation y on x. Yes. Everyone done? Everyone done? इसके ऊपर अभी बाकी है.
एवरीवन इसके ऊपर का बाकी है, चलो लिखो जल्दी फास्ट लिखो समथिंग। Question number 2. Given the following values, estimate. Am I clear? Am I clear? अभी सुनाई दे रहा है बराबर से? Am I clear? ठीक है। Question number 2. चलो. Given the following values, estimate the yield of wheat when rainfall is 15.5 centimeters. Yield of wheat को लिखो x. Write yield of wheat as x. Annual rainfall as y. Write annual rainfall as y. Yield of wheat of mean of yield of wheat मतलब ये x बार है, लिखो इसको x बार. Write here x bar. Standard deviation of v, deviation of x. Rainfall is 20.5. Write here y bar. Standard deviation of rainfall is 5. Write here standard deviation of y. 0.5. 0.5. What can you find? Estimate the yield क्या है? X है के y है? Yield of wheat क्या है? X है के y है? What is yield of wheat? X or y? X. लिखो question mark. लिखो ऊपर x is equals to question mark. This is 15.5 centimeters. What is rainfall? What
y. लिखो y is equals to 15.5 x is equals to question mark y is equal to 15.5 सेंटीमीटर। एस्टिमेट करना है मतलब कौन सा इक्वेशन लगेगा? We have to estimate x means which equation is required? Regression equation x on y के y on x. Estimate x है तो कौन सा लगेगा? Estimating x means will require what? Regression equation. Everyone reply. Come on, so many children. Estimating x. Estimating x when value of y is given and x on y लगेगा. So we do it here. Question number 2. Question number 2. We have to estimate x when y is given. So x bar is given as 10.7. Y bar is given as 20.5. Standard deviation of x is 8.1. Standard deviation of y is 5. R is 0.5. We have to estimate x when value of y is 15.5 सेंटीमीटर्स। बराबर है। इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y लगेगा। सबसे पहले x बार, फिर y बार, फिर bxy. सो bxy इज r into standard deviation x upon standard deviation y. लिखना है मेरे साथ। r is 0.5. Standard deviation of x is 8.1 upon 5. So we write here 0.5 into 8.1 divided by 5. What do we get? 0.81. Bxy is 0.81. बराबर? Second is regression equation x on y. X on y means x minus x bar. Bxy. Y minus y bar. x minus x bar देखो क्या दिया है? x bar is 10.7. bxy is 0.81. y minus y bar is given to us 20.5. y bar is given to us as 20.5. So x on y है तो x on left side, everything else on right side. 0.81 y. 0.81 into 20.5 करो. 0.81 into 20.5. 16.605 आया. 16.605 प्लस माइनस साइन से माइनस करो. प्लस 10.7. You get minus 5.905. Look here. Minus 5.905. So we write here minus 5.905. This is the standard form of regression equation x on y. X is equals to bxy into y plus c. Now third, estimate बोला था तो डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन जस्ट तुम्हें समझाने के लिए ये मैंने किया है. y is 15 minus 5.905. So 0.81 into 15.5, 12.555 minus 5.905. X is 0.65. X is 6.65 kgs. X is 6.65 kgs. Everyone?
वी सब्स्टिट्यूटेड y और y सब्स्टिट्यूट किया 15.5 x ऑन y में, तो आंसर x का मिला। वो यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लिसन एवरीवन, ये जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से हम यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फर्स्ट टाइप था इसलिए मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे अलग से किया। यहाँ पे डायरेक्टली 15.5 डाल देंगे एंड आंसर ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। दे हैवंट आस्क्ड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। समझा? हाँ या ना, कुछ बोलो। सब फ्रीज दिख रहे हैं मेरे को एकदम। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। For a bivariate distribution, mean value of x is 52.1. लिखो इधर x bar. Mean value of y is 112.3. लिखो y bar. R is equals to minus 0.3. The most probable value of y when x is equals to 38. लिखो y is equals to question mark when x is equals to 38. डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y on x में। x इज इक्वल टू 38 को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझा? इसके लिए पहले y ऑन x और फिर एस्टिमेट y व्हेन x इज 38 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 98, सो फॉर दिस वी रिक्वायर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। x ऑन y में डायरेक्टली y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हैव यू अंडरस्टूड? योर वेरिएंस ऑफ x इज गिवन, सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 9, variance of x is y is 144, मतलब standard deviation of y is 12, correct? Question number 3. X bar. सबसे पहले first bx1 bx1 is minus 0.3 into standard deviation x upon standard deviation y. बोलो आंसर। रिग्रेशन इक्वेशन x on y लगेगा 0.3 into 7 divided by 12 minus 0.175. Second, regression equation x on y. Regression equation x on y में डायरेक्टली एस्टिमेट x कर देंगे। एस्टिमेट x when y is 98. X minus x bar bxy, y minus y bar. So x minus 52.1 bxy is minus 0.175. Y is given to us 98. देखो minus y bar 112.3. Correct? So x minus 52.1 is equal. अभी करो 98 minus 112.3. You get minus 14.3. Minus 14.3. Yes. अभी ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस 0.75 भी माइनस है, मतलब प्लस होगा। इसको प्लस कर दो 14.3 into 0.175. You get 2.5025. मिला 2.5025 5025। ये 52.1 प्लस होगा, so plus 52.1
So you get x is equals to 54.6025. Third, byx is r minus 0.3 into standard deviation of y 12 upon standard deviation of 10. So 0.3 into 12 divided by 7 minus 0.51. Fourth, regression equation y on x may direct substitution by x minus y minus y bar क्या है now see here minus 52 38 minus 52.1 is minus 14.1 करेक्ट ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यस मल्टीप्लाई बाय 0.51 7.191 plus 112.3 119.491 everyone 119.491 have you understood yes have you all understood बराबर y is 119.491 everyone got the answer मिला ये समझा उन्होंने रिग्रेशन इक्वेशन y on x नहीं पूछा है डायरेक्टली आंसर y on
और x का पूछा है, तो यहाँ पे नथिंग इज गिवन राइट यूनिट्स, राइट यूनिट्स या नथिंग इज गिवन राइट यूनिट्स। जैसे लास्ट सम में केजीज और रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स नहीं दिया था, ओनली दिस इज गिवन राइट यूनिट्स, करेक्ट। चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। given the following data, mean of x is 80, mean of y is 98। एक मिनट। Yes. Given the following data, mean of x is 80, mean of y is 98, variance of x is 4, मतलब standard deviation of x is 2, mean deviation of x is 3, coefficient of correlation r is 0.6. The most likely value of y when x is 90. Most likely value of y लिखो ऊपर। Regression equation y on x is required y when x is 90, so regression equation y on x is required, तो directly substitute कर देंगे हम 90। Have you understood? So we will do question number 4. Question number 4. X bar is 80, y bar is 98, standard deviation of x is 2, standard deviation of y is 3, r is 0.6. We have to estimate y when x is equals to 90. So सबसे पहले x bar, y bar, फिर by x is r, that is into standard deviation y upon standard deviation x, 0.6 into 3 divided by 2, 0.9. Second, regression equation y on x, y minus y bar, b by x, x minus x bar. So y minus y bar देखो ऊपर 98, 0.9. x का आंसर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज दे हैवंट आस्क्ड what is regression equation y on x. X is 90, x minus x bar is 80, 90 minus 80, 10, 0.9 into 10, 9 आया, 0.9 into 10, 9 आया, plus 98, plus 98, 107. So y is equal to 07. Nothing is given regarding units. Answer is
D. Answer is D. बराबर. Answer is D. Julius, almas no phone आ गया. Question number 5. Given below the information about the capital employed and profit earned by a company over last 25 years. N is 25. Capital employed is in thousands. ये x है, लिखो इधर x. Profit earned is y. Mean is 62. Standard deviation is 5. This is 25. Profit earned and standard deviation of y is 6. X bar 62 है, y bar 25. Standard deviation of x is 5. Standard deviation of y is 6. Correlation coefficient between in profit, capital and profit is 0.92. मतलब R is 0.92. What have they asked? The sum of regression coefficients. They have asked the sum of regression coefficients. मतलब bxy plus byx पूछा है. કીધું ને મેં તમને કે અલ્માસ નો ફોન આવે તો કરો તમે. નહીં પૈસા નથી. Question number 5. X bar is 62. Y bar is 25. Standard deviation of x is 5. Standard deviation of y is 6. R is 0.92. We have to find the sum of regression coefficients bxy plus byx का sum find करना है. Correct? So सबसे पहले bxy is r into standard deviation x upon standard deviation y. 0.92 into 5 divided by 6. 0.7666 मतलब 77 m plus में. Byx is r into standard deviation of y upon standard deviation of x. 0.92 into 6 divided by 5. 1.104 m plus में mr. bxy plus byx is 1.870666 मतलब 8707. अभी देखो which is the correct option. Answer is A. 1.871. Answer is A. Answer is A.
Question number 6. Following are the values of x and y. X and y values are given. See, x and y columns are given. 1, 5, 3, 2, 1, 1, 7, 3. Y column is given 6, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 5. Find regression line of y on x and then predict y if x is equals to 5. Find regression equation x on y. अभी देखो यहाँ पे बोला है फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x, ऐसे बोला है स्पेसिफिकली. मतलब हम लास्ट सम जैसा डायरेक्टली नहीं कर सकते. पहले हमें रिग्रेशन इक्वेशन y on x फाइंड करना होगा and then only we can predict y if x is given to be 5. इक्वेशन x regression equation on y हमें फाइंड करना है. Predict x if y is equals to 2.5. Calculate Carl Pearson's coefficient r. R हमें फाइंड करना है. Yes. So first we have to be हमें regression equation x on y as well as x करना है. सबसे पहले फिर y फिर bx y फिर regression is given. ये सारे करने होंगे हमें स्टेप्स, बिकॉज यहाँ पे x बार और y बार दिया हमें नहीं है. दूसरा उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है आप रिग्रेशन इक्वेशन x on y you have to find. Means first we will find regression equation x on y and then we will predict x if y. Then we have to find regression equation y on x. तो उसके लिए भी x बार y बार byx फिर regression equation y on y if x is equals to 5. Correct? And then we have to calculate Carl Pearson, that is R. Am I clear, everyone? Am I clear? Am I clear, everyone? अभी क्लियर है? मैंने के काले रैबिट उठा भी ले सोसाइटी में. Everyone? Yes, question number 6. Question number 6. सबसे पहले फर्स्ट x बार. First x bar is summation x upon n. x कॉलम का टोटल करो. चलो आंसर बोलो मेरे को. x कॉलम का टोटल करो, आंसर बोलो. 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 7 divided by 3 6 by 8. कॉलम का टोटल करो. 6 plus 1 plus 1 2 plus 1 plus 5 equals to 16 by 8. This is 2. X bar and y bar are done.
Next, third, y. bxy, here see, पहले में तो r स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड, एवरीवन एबल टू लिसन? सुनाई दे रहा है बराबर से? एवरीवन सुनाई दे रहा है? ओके, सुनो, बी एक्स वाई के फॉर्मूलाज देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बी एक्स वाई के फॉर्मूलाज देखते हैं। बी एक्स वाई फर्स्ट फॉर्मूला इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। सेकेंड ये वाला है, देखो, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू वाई अपॉन एन summation y square minus summation y the whole square upon n. Bxy is buv. Summation uv minus summation u into v upon n. Summation v square minus summation v the whole square upon n. फिर ये वाला भी है। अभी फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, कब यूज करते हैं पता है? जब r स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y bxy 1 2 3 ये तीन इंफॉर्मेशन दी होगी ना, तो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ bxy। r दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन x दिया होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन y दिया होगा, जैसे अब तक के सम में हमने किया है, विल यूज bxy। नेक्स्ट bxy यूज करेंगे। फिर अगर दे हैव गिवन एक्स एंड वाई कॉलम्स, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई और आर का आंसर नहीं दिया है, तो हम समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई द होल स्क्वायर अपॉन एन, ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज दिस इज कन्वीनियंट मोस्ट। इन एस वाई जे सी वी यूज दिस बिकॉज दिस इज easy for calculation manually. In CFC, we have calculators, hence we'll use this. You understood? Yes, everyone. Mix mat karna SYJC or CFC ko. Please. In CFC, we will use this. In SYJC, we use this because we are doing the calculations manually. So इसमें टेबल बहुत आसान हो जाता है and हमारी mistake calculation में नहीं होती है. So don't change the method in SYJC by using this. Whatever I have taught you is absolutely correct as per the SYJC. Correct? So हम यही यूज करेंगे। bxy is summation xy minus summation x into y upon n। डिनोमिनेटर में समेशन नहीं मत करो, ये वाला नहीं करने का। Unless and until not specified not to use this formula, x bar और y bar decimal points में, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग आया तो, so not to be used. Unless and until in CAFC, if they mention, give information regarding this and regarding this formula, ये वाला थर्ड और फोर्थ, तो ही यूज करने का। बाकी फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ही यूज करने का if x and y columns are given. In CAFC, SYJC में again I'll repeat, we have to use this only. UV वाला ही, वो चेंज नहीं करना है। Yes, so we use this. bxy is summation xy minus summation x into summation y upon, डिनोमिनेटर में y आएगा, summation y square minus summation y the whole square upon n। करेक्ट? चलो अभी xy करते हैं। विल कैलकुलेट summation xy। चलो summation xy, everyone start doing summation xy बच्चों। 1 into 6 m plus 5 into 1 m plus 3 into 0 is 0, forget, 2 into 0 is 0, forget, 1 into 1 m plus 1 into 2 m plus 7 into 1 m plus 3 into 5 m plus mr 36. Summation xy is 36. I'm just writing here for your understanding बच्चों। 36 minus summation x का total is 20, ये m plus में है। summation x का total is 23 into 16 divided by 8, ये डालो m minus में, 23 into 16 divided by 8, m minus में 46, mr minus 10, mr is minus 10, this is minus 10,
चलो डिनोमिनेटर, अभी डिनोमिनेटर करते हैं समेशन वाई स्क्वायर। चलो वाई का स्क्वायर करो, ऑन एसी दबा दो, समेशन वाई दो वाई का करो 6 मल्टीप्लाई एम प्लस 1 मल्टीप्लाई एम प्लस 0 0 जाने दो 1 मल्टीप्लाई एम प्लस 2 मल्टीप्लाई एम प्लस 1 मल्टीप्लाई एम प्लस 5 मल्टीप्लाई एम प्लस एम आर 68 summation y square is 68 minus summation y is 16 the whole square divided by 8, ये डालो m माइनस में 16 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 32, m माइनस में डालो m r 36, करेक्ट। वी गॉट 36 बच्चों, वी आर एट द डिनोमिनेटर, इधर we are at the denominator, divide equals to multiply by 10 equals to, so bxy is minus 0.27728 2777 recurring, तो 28, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट उन्होंने बोला है यहाँ पे टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन x on y, they have asked to find regression equation x on y, so we will do this fourth step, regression equation x on y is x minus x bar bxy y minus y bar, correct। x minus x bar is over here, यहाँ पे देखो x bar is 2.875 bxy is minus 0.28 y minus y bar देखो यहाँ पे y bar is 2, so x is equals to ये minus 0.28 y, ये माइनस माइनस प्लस होगा, करेक्ट। सो माइनस 0.28 इंटू 2 0.56 प्लस हुआ, यस माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 2.875 plus 2.875, this will be plus 3.435. This is a standard form of regression equation x on y. X is equals to bxy into y plus c. X is equals to bxy into y plus c. यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, इसलिए हमने ये किया है, करेक्ट एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है देखो बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट आंसर, एस्टिमेट एक्स when y is 2.5, that will be the fifth, estimate x when y is equals to 2.5, x is equals to minus 0.28 into 2.5, y है ना y, उसकी जगह 2.5 सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 3.435, सो करो चलो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.28, यू गेट 0.7, और ये माइनस है तो प्लस माइनस साइन से माइनस करो, प्लस 3.435, what do you get dear children, x is equals to 2.735, everyone nothing is given, write units, नहीं x क्या दिया है, x is nothing is given, so write units. My lecture is still 6, no, है ना, ओके, विल डू y वाला नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि अभी टाइम नहीं है, यस, दोज हु हैव कंप्लीटेड कैन लीव, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम हम आगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यू मे लीव एंड ज्वाइन द नेक्स्ट लेक्चर दोज हु हैव कंप्लीटेड।
Chalo, bye, dear children.